Welcome back, guys. हम करेंगे mass, weight and density question 5 paper 2. Question 5. Let's start. A student records the mass and volume of two irregular objects, one made of iron and other one made of copper. So mass and volume of two irregular objects, one made of iron and one made of copper. So we know where it is going towards density. Acha. The student uses equipment shown in figure 1.1. So it's a measuring cylinder or an electronic balance. Table 1.1 shows the results obtained. Acha, easy as that. Describe how to determine volume of an irregular object with a measuring cylinder. अच्छा, अब आप बात सुने. मेजरिंग सिलेंडर ये है और इसमें फॉर एग्जांपल 20 लाइक 20 के मार्क तक इसके अंदर पानी भरा हुआ है. 20 मार्क तक पानी भरा हुआ है. तो और इसमें फिर एक इरेगुलर पत्थर डाला जाता है. इसके अंदर एक पत्थर डाला गया है. ठीक है ना. एक इसके अंदर पत्थर डाल दिए गए. तो अगर इस पत्थर को डालेंगे तो ये जो पानी है इट विल राइज. सो द वाटर लेवल विल राइज एंड फॉर एग्जांपल इट rises up to 35, right? If it rises up to 35 cubic centimeter, then the difference between before adding the rock and after adding the rock will be 15, and that will be the volume of the rock. समझ आइए आपको. इट्स वेरी सिंपल. आपको मैंने उर्दू में बता दिया. सो व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना ऐड द पहले हम बिफोर एडिंग द रॉक विल or the irregular object will note down what the volume is, and after adding the rock will note down what the volume is. Will then we'll subtract the larger volume from the smaller volume to get the volume of the rock. That is very simple, very basic science. So this is the answer. Calculate the density of iron. Density is equals to mass divided by volume. Density density is equals to mass क्या होगा? Of iron ना. मास क्या होगा? 400 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है? 51. So 400 divided by 51 will give us 7.8431. So this will be the density of iron. Grams per cubic centimeter. Very simple. Third object, which is also made up of copper, it is also made up of copper, has the same volume as an iron object. So उसका वॉल्यूम हमें पता चल गया. उसका वॉल्यूम होगा द सेम एज द आयरन ऑब्जेक्ट, और आयरन का वॉल्यूम है 51 cm क्यूब. सो दैट इज इट हैज द सेम वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का हमें पता चल गया. आगे कैलकुलेट द मास ऑफ द कॉपर ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम का हमें पता था. कॉपर का हम डेंसिटी निकाल लेते हैं. वी हैव द स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन अस कि हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास कितना है? 350. वॉल्यूम कितना है? 39. सो इफ वी do the math, 50 39 will get 8.9744. अच्छा, this is the density. We have the density, we have the volume. So अगर we apply the formula density is equals to mass divided by volume, density will be 8.9744 is equals to mass divided by 51, which is the volume. Sorry, 8.9744
744 multiplied by 51 will give us the value 257 या 260 लगा लो. Mass will be 460, sorry, 460 grams. ठीक है ना? As simple as that. State and explain what happens to the density of the iron object when it is heated. When it is heated, it will be subjected to thermal expansion, and when thermal expansion happens, the volume increases, and when the volume increases, then the density reduces. Density is equals to mass divided by volume. ठीक है ना? It is mass divided by volume. So the more the mass will be, the less the density will be. The more the volume will be, the less density there will be. अच्छा, कौन सा पार्ट था? डी. So to sum it up, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है? एक्सपेंशन होती है. So expansion in volume होती है, mass is unchanged, and when the volume is increased, और जब volume increase होता है without the change of mass, then the density will decrease. Very simple. So thank you for watching. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.